Good evening, hello and welcome. You're with CNN News 18. I'm Anusha Soni. Our top focus this hour, what else it could be? Droupadi Murmu is all set to be the next president and she's on the verge of creating history as she leads the presidential race with a huge margin. NDA candidate has got over 3,70,000 votes, whereas opposition candidate Yashwant Sinha has got about 1.45 lakh votes. Murmu will have many firsts to her name. The first tribal president, the first to be born after independence, and the first president from the state of Odisha. Meanwhile, Prime Minister Modi will shortly meet Droupadi Murmu. Following this, other union ministers and chief ministers will also meet the lady. सिंपल बैकग्राउंड से बहुत ऊपर उठ सके, महिला है, ट्राइबल है, बहुत पर्सनल ट्रेजेडीज भी हैं. आप कैसे देखते हैं उससे? नहीं, वो तो पहले से ही बहुत सिंपल है. हाँ. और सिंपल का चलते और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ये ज़्यादा भी है. उसी चलते वो अभी इतना दूर तो जा रहा, मतलब अभी तो राष्ट्रपति बनने वाला है. और जब पहले भी था उसी टाइम कोई भी आए तो यहाँ मिलते जुलते था आदमी का साथ. सब आदमी का मतलब दुख सुख सब कुछ समझते थे. कोई भी आए, कहीं से भी आए, उसका बात को समझते थे. लेकिन सब आदमी द्रौपदी करके ही बुलाते हैं. Well, let's tell you more about this historic presidential election and more importantly, how is it that the President of India is elected? Let's take you through the rules of the election once again. As per Article 54 of the Constitution, the President is elected by the members of an electoral college. Now, this electoral college comprises of important elected legislators. Electoral college consists of elected members of both the houses of parliament. It also consists of elected members of the legislative assemblies of the various states. There are nominated members. They are not eligible to be included in this electoral college. So that's the key process that is followed under Article 54 of the Indian Constitution. And of course, a very important election, keeping in mind that the president holds a very important democratic and constitutional position in under India's law and order situation. Let's now cut across to my colleagues who are tracking the story from the ground. Akash is with us from Delhi. He's tracking all the happenings at the residence of Droupadi Murmu. Akash, tell us about what the atmosphere is really like. What are you picking up? So, Anusha, since morning we are seeing the preparations at this particular place because we are also learning that as BJP and all other Karyakartas of the BJP are very sure that Droupadi Murmu is going to win. So, there is a program that Prime Minister Modi will be visiting this particular place and he would be the first person who will be congratulating the 15th President of India. And that's the reason why since morning we are seeing the kind of preparations. And also, if I can ask my VJ Ganesh to show you these chairs, you are seeing the media personals and security personals as of now, but we are learning that senior BJP leaders would be coming and sitting at these particular chairs and also the stage. There you can see only one seat is there, and that one seat is for the next president, or we can say the expected president, 15th President of India. Let me tell you about this particular candidate. So, because, since morning we are talking about this particular election, this candidate is very much important, not just because she's coming from a tribal community, but also because she has seen a lot in her life. We were told that, from year 2019 to 2014, she lost very close members of her family, including her husband, her son, and also her mother. So, total 6 members she lost, and after that she went into some kind of sort of depression, and that's the reason why, she took the help of meditation. So she has seen a lot. Administrative-wise, she has got all the experience, and that's the reason why this candidature was very much important. We have seen in the past that how political parties, not only the allies of BJP, but also those who are the opposition parties, supported the candidature, and that's the reason why, everyone is pretty sure that Droupadi Murmu is going to make it possible. She'll be the 15th President of India. And talking about this particular condition, at this point in time, we are, waiting for Prime Minister Narendra Modi. We are learning that after the announcement of result, he'll be coming here. He would be congratulating Droupadi Murmu and all other things. All other senior BJP leaders would be coming as well. At this point in time, Election Commission is going to announce the results, and we are waiting for that as well, Anusha. That's right, Akash. Let me also cut across to my colleague Siddhant, who will also tell us what kind of preparations are being made for the celebrations that are likely to follow. Siddhant, what are you picking up? Well, there you see
the celebrations have begun, and in fact, I'm reporting from this auditorium, which is next to Droupadi Murmu's residence, and you can see the women here have come from Orissa, and they are doing folk dance of Orissa. To celebrate the expected victory of Droupadi Murmu. So people have come from various states here at this auditorium, and they have been told that once victory will be declared, then they will get a chance to welcome Droupadi Murmu, the next president of the country. And this is perhaps the reason that it's a big day, it's a proud moment, not just for people of Orissa, but people those who come from the Adivasi community, and for that matter, for entire country. And this is the reason that I can sense great energy and enthusiasm among people, those who are able to speak to some of them. Sir, कहाँ से आए हैं? हम लोग कठपुतली कॉलोनी दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, तो कितना उत्साह है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जीतने जा रही हैं, चुनाव तय है लगभग, और वो देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही है। आदिवासी समाज से वो आई हैं, एक उनका जो एक सफर रहा है, एक तकलीफ भरा, उसके बाद उन्होंने मुकाम हासिल किया। कैसे देखते हैं? आई थिंक ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि जिस तरह से द्रौपदी मैम इस वर्ग से आई हैं, ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। और चूंकि वो एक महिला हैं और आदिवासी समाज और इस तरह के समाज से बहुत कम लोगों की प्रतिभागिता होती है, पर हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि उनको राष्ट्रपति के पद पे चुना गया है, और काफी उम्मीदें भी हैं उनसे, जिससे महिलाएं और उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। ये क्या है? ये राजस्थान की डांसर हीरा गुजरी। राजस्थान की कठपुतली हीरा गुजरी। अच्छा, तो इसको लेके उनका स्वागत करेंगे? जी हाँ, ये तो डांस शुभ माना करेगी, जाता है। अपना डांस करेगी, उनको दिखाएगी, वेलकम करेगी। उनको दिखाएंगे। आई थिंक ये महिला सशक्तिकरण का महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। महिला सब कुछ, इस देश में महिला सब कुछ कर सकती है। देश में महिला सब कुछ, और महिला मेरे साथ यहाँ पे, महिला से ही सवाल लूंगा, कैसा महसूस करती है जब एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही हैं, बस कुछ ही क्षण में जो उनकी जीत है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी, कैसा महसूस करती है एक महिला होने के नाते? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया महसूस करते हैं कि महिला बाहर निकल के काम करे, बहुत अच्छा लगे, उनकी घर गृहस्थी संभले, बहुत बढ़िया, देश विदेश लेके सब जगह जाना अच्छा लगता है। तो ये क्या आज आप लोग का क्या यहाँ का कार्यक्रम क्या, थोड़ा वो समझाइए सीएनएन के दर्शकों को कि क्या कुछ नृत्य या कुछ आर्टिस्ट लोग कुछ अपना नृत्य करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो कितने बजे तक मैडम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ आपको बताएंगे? 7 से लेकर 5 बजे का टाइम था हमारा, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया है। और जो मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, उनका हम लोग सब आर्टिस्ट लोग मिलके वेलकम के लिए। अच्छा, तो कितने बजे तक आपको बोला गया आएंगे? 5 बजे से था, लेकिन आपको पता है प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं? हाँ जी, हमें बहुत खुशी है उन्हीं के वेलकम के लिए। एक अलग ही एक एनर्जी है यहाँ पे इस हॉल में, हाँ, जो आप लोग सब इंतजार कर रहे हैं बैठ के। राजस्थानी हमारा ये कल्चर। आप लोग राजस्थान से हैं? इस बात की बहुत खुशी है कि ये जो आदिवासी समाज से हमारी देश की राष्ट्रपति बन रही है, उस चीज को हमें मतलब अंदर से बहुत मजबूती मिलती है, समाज को भी बहुत मजबूती मिलती है। इस ओर चलते हैं, उनको भी थोड़ा दिखा देते हैं। सो हियर women are dancing on Orissa folk music. We'll speak to some people here. We'll speak to women also. सर, क्या बताइए, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? उड़ीसा से एक महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है देश की, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? भावुक क्षण है। आज के सबसे बड़ा दिन है। भारत स्वाधीन से आज 75 बाद में स्वाधीनता, आज आदिवासी का बहुत खुशी का दिन है। बहुत समाज को मजबूती मिलती है इससे, पूरे समाज को मजबूती मिलती है जब समाज का की एक महिला उस पद पे बैठेंगी। समाज तो पूरा मजबूत होता है। जो समाज में नीचे था है, हम कभी नहीं सोचा था नहीं है, जो आज वो दिन आएगा, वो भारत का राष्ट्रपति होगा। इस दिन में सोचा नहीं था, नहीं सोचा था, लेकिन आज वो दिन साकार हुआ। बहुत मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को बहुत बहुत अच्छा, आप दर्शकों को फटाफट ये समझा दीजिए कि ये जो डांस है इसको क्या कहते हैं, और जो म्यूजिक बज रहा है संताल का डांस है। ये संताल का खुशी का डांस है। जो दिन संताल लोग खाना पीना, जो दिन अच्छा मिलेगा, जो दिन पवन मिलेगा, जो दिन हमको खुश आदिवासी समाज का जो बहुत खुशी का दिन, समाज ये समाज का एक खुशी का दिन है। और समाज सोच दिन रात में जहाँ भी जाएगा, आदिवासी समाज में ये कुछ गा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, गाना जो हमारा जो गाइए ना। तारा हारी तारा गोना ना तारना, तारा हारे तारा गोना ना तारना, तारा हारे तारा गोना ना तारना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सीएनएन के दर्शक ये म्यूजिक